Okay, so hello everyone. My name is Kunal, and I'm your mathematics tutor. And today is our second lecture on basically probability chapter. And okay, so let me recap the things कि हमने कल क्या क्या डिस्कस करी थी. So कल हमने क्या करा था कि आपने जितने भी क्लास 11th में कॉन्सेप्ट पढ़े हो या करे होंगे ना, तो उसकी कल हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करे थे. रियल लाइफ प्रॉब्लम हमने कल डिस्कस करे थे. जैसे पहला डिस्कस करा था कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन वाली करी थी हमने, है ना. एंड दूसरा करा था ट्रूथ एंड बेसिकली लाई डिटेक्टर टेस्ट पे था. एंड और एक प्रॉब्लम करी थी. आई थिंक आई एम नॉट रिकॉल इट राइट नाउ, बट हमने प्रॉब्लम शायद इस पे करा था. लेट मी व्हाट इट इज एक्चुअली. या दी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर को इंक्लूड करा था हमने. प्रोबेबिलिटी मतलब रियल इम्प्लीमेंटेशन वट एवर पॉसिबल था हमने देखा था. So today we are gonna read some new topics which is defined as conditional probability. Okay, so आज अपन cover करने वाले हैं conditional probability. So before covering this topic, I have a question, very interesting questions based on cricket match as I have. Okay, so I want to discuss the problem and then we will move to the conditional probability. सो देखो आप सभी ने एक वो देखा होगा ट्राई सीरीज. पता है ट्राई सीरीज क्या होती है? तो ट्राई सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट है बेसिकली. तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट में क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है बता देता हूँ. होपफुली सबको पता ही होता है, बट ठीक है, मैं बता रहा हूँ अगेन. मैं आपको बता दे रहा, समझा दे रहा एक बेसिक आइडिया. तो तीन टीमें होती हैं, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी. ओके, सो ईच टीम को दो दो मैच खेलनी होती हैं. ठीक है, तो होता क्या है कि हर एक टीम को दो दो मैच खेलना होता है. मतलब टीम ए को पहले टीम बी के साथ खेलना होगा और टीम बी को एंड देन टीम ए को टीम सी के साथ खेलना होगा. तो और अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट टेबल्स बन रही होती हैं, लाइक ए बी सी, वॉन एंड लूज का. ठीक है, तो मान लो कि टीम ए जो है ना टीम बी से जीत गया और टीम सी से हार गया. ठीक है, एंड टीम बी जो है ना, तो ऑब्वियसली टीम बी जो था वो टीम ए से जीता था एंड टीम सी से ये भी हार गया. एंड टीम सी दोनों को हरा चुका है, क्योंकि देखो ये जो पहला मैच जीता है वो किससे जीता है? टीम बी से जीता है. टीम सी से हार चुका है. टीम बी जो है टीम ए से जीता है ना एक मैच, तो वो एक हो गया, और टीम सी से ये भी हार चुका है, तो ये 2-0 ऐसा कर चुका है. ठीक है, तो अब इन दोनों में से जिसकी नेट रन रेट की जो बात होती है, नेट रन रेट जिसकी हाई होगी वो इसके साथ खेल के वो जो टी सीरीज की जो कप होगी ना, जो फाइनल कप होगा, वो टीम ले जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक मॉडल ऑफ ट्राई सीरीज. ठीक है, ये अब इस पे एक प्रॉब्लम्स है. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. सो आई एम गोना basically I want to discuss the problem with you all. So the problem is actually, let me write it here. The problem is India play two matches each with West Indies and Australia. There's a tri series between India versus Australia versus West Indies. Okay, so and let me write the question and then I'm gonna elaborate the problem. So India plays two matches each with West Indies and Australia. Uh, in any match, probability of India scoring the 0 point, 1 point, and 2 point. Look at here. What I'm trying to say. If team win, he get 2 points. And if the team lose, he gets 0 points. But if the match drawn होगा ना, तो अगर match drawn होता है, so he will get 1 point. Okay, so let me write it here कि what I'm trying to write here. So in any match, probability of India scoring 0, 1, 2 points are. अब यहाँ पे कुछ probabilities दी हुई हैं. So क्या probability है? Let me write it here. In any match, the probability of India scoring 0, 1, 2
points are 0.45, 0.05, and 0.5 respectively, assuming outcomes to be independent. Then you have to find the probability of India getting at least 7 points. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि जो मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स हैं वो कितने हैं? तो देखो, इंडिया प्लेज 2 मैचेस ईच विथ वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो इंडिया है ना, वो 2 मैच खेल रहा होता है वेस्ट इंडीज के साथ, एंड 2 मैच खेल रहा होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अगर उसने सारे मैच जीत लिए तो 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट टोटल 8 पॉइंट हो जाएंगे ना। और अगर इंडिया ने सारे मैच हार गए तो इट विल गेट 0 पॉइंट। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 7, एटलीस्ट 7 पॉइंट। एंड सो दैट मीन्स एटलीस्ट 7 पॉइंट का मतलब क्या है? या तो 7 पॉइंट आ जाए या तो 8 पॉइंट आ जाए, है ना? क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स कितने हैं? 8। 8 ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। और 8 कब होंगे? जब इंडिया सारे ही मैच जीत जाए, है ना? एंड 7 कब हो रही होंगी? तो 7 पॉइंट तब हो रहा होगा जब कोई 3 मैच जीत जाए और एक मैच ड्रॉ हो जाए। सो ही विल गेट 3 to the 6 point for winning and 1 point for draw. I hope these things were clear to all of you. So मैं क्या बोल रहा कि अगर इंडिया जो है ना 3 मैच जीत जाए और एक मैच ड्रॉ हो जाए, so India will get 7 points. Okay, so we have to write the probability. So let me write the favorable case. So let's go to the favorable cases. So the favorable cases were कि अगर इंडिया सारे मैच जीत जाए, that means 2 point 2 point 2 point 2 point. This is M1 M2 M3 M4, मतलब मैच 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4, मतलब सारे ही जीते। तो यहाँ पे देखो, जो स्कोरिंग जो 2 पॉइंट करने का स्कोर है वो 0.5 प्रोबेबिलिटी है। तो दैट मीन्स 0.5 to the power 4, क्योंकि चारों पॉइंट मतलब जितने भी मैच है सारे में उसको क्या है? जीतने हैं भाई, है ना? और देखो यहाँ पे क्या है ना कि लेट मी राइट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 M2 M3 M4, चारों ही मैच में जीतने। एंड द ऑल ऑफ द मैचेस आर इंडिपेंडेंट इवेंट, एंड वी ऑल नो दैट कि अगर मैचेस इंडिपेंडेंट इवेंट हो रही होती हैं, सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 इंटरसेक्शन M2 इंटरसेक्शन M3 इंटरसेक्शन M4 इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M4। यही होती है ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। सो आई एम जस्ट गोना डू दैट। चारों के चारों में जीत रही तो सो 0.4 टू द पावर 4 नाउ प्लस। ऐसा हो सकता है कि 2 2 2 2 1, है ना? बट चारों में से कौन सी मैच ड्रॉ हो रही है उसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, या तो पहला ही मैच ड्रॉ हो जाए, या फिर दूसरा मैच ड्रॉ हो रहा होगा, या फिर तीसरा मैच ड्रॉ हो रहा होगा, या फिर चौथा मैच ड्रॉ हो रहा होगा। तो दिस इज आई एम सेलेक्टिंग दी एक्चुअली विच मैच विच मैच हैड ड्रॉन, है ना? कौन सी मैच ड्रॉ हुई है। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो पहला हुआ होगा, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा। तो मैंने वो सेलेक्ट कर ली। अब देखो, ड्रॉ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? एक पॉइंट का है 0.05। सो दैट मीन्स 4C1 इंटू 0.05, एंड देन जो रेस्ट बचा वो क्या होगा? 0.5 टू दी क्यू, क्योंकि बाकी क्या है? बाकी में तो जीत ही रहा ना। तो दिस इज द एक्चुअली फाइनल आंसर फॉर द ट्राइसेज प्रॉब्लम। I hope this is the easy problem, so you can easily solve this kind of problem as well. So, okay. Uh, Now I'm gonna discuss some important concept which is named as conditional probability. So let me give the headings.
conditional probability. Okay, so it is first let me give the its definition. So it is the probability of occurrence of an event A given that the event B has already occurred. ठीक है, या फिर the समथिंग लाइक कि ऐसा देखो मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल देके, पहले एग्जांपल समझाता हूँ देन आई एम गोना राइट द डेफिनेशंस. सो ऐसा देखो कि यहाँ पे एक बॉक्स है और इस बॉक्स में ना लेट मी राइट इट वेयर इट्स सम रेड बॉल 1 2 3 4 5 है ना, एंड some green ball here like 1 2 3 4 5. Okay, so in this box there were 5 red balls, 1 2 3 4 5, and 1 2 3 4 5, 5 green balls as well. So in this box we have 5 red balls and 5 green balls. Okay, so what actually we have to do is कि यहाँ पे होता क्या है कि अगर एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है. मतलब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा कि आई एम सेइंग कि मैं दो बारी मतलब 2 बॉल निकाल रहा हूँ यहाँ से. ठीक है, मैं 2 बॉल निकाल रहा हूँ. जो पहली बॉल आई ना वो रेड बॉल आई. तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब दूसरी बॉल मैं निकालूंगा तो वो ग्रीन बॉल होगी. यहाँ पे समझो, एक इवेंट हो चुका है जो मुझे दिख रहा है. मैंने क्या बोला कि देखो 2 बॉल हमें निकालनी है बारी बारी करके. मैंने पहली बारी बॉक्स से बॉल निकाला एंड उसको देखा तो वो था रेड कलर की बॉल थी. नाउ आई एम आस्किंग कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं दूसरी बार बॉल को निकालूंगा, मतलब जब दूसरी बार जब मैं बॉल निकालने जा रहा तो जो बॉल निकलेगी वो ग्रीन कलर की होगी. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली नोन एज कंडीशनल इवेंट. कि एक इवेंट हो चुका होता है तो दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक एग्जांपल. तो आपने ये ऐसा काम करा होगा कि एक बक्से में बहुत सारे वो रख दिए होंगे एंड देन थिंक कि क्या ही प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन बॉल होगा या रेड बॉल होगा. तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं. सो दिस इज द एक्चुअली बेसिक of conditional probability. So let me write its definitions now. So let me write it here. Probability of occurrence of an event. Probability of occurrence of an event A, given that event B has already occurred. एंड वही मैं बोल रहा ना कि देखो मैं पहले ही बोल दे रहा कि जो मैं देखो 2 बॉलें हमें निकालनी है. पहली बॉल जो आई वो रेड आई एंड जो दूसरी गेंदें आई वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लू जो ग्रीन होगी. तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए गिवन दैट कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. नाउ इसको डिनोट कैसे करते हैं वो मैं लिख देता हूँ. सो इट्स डिनोटेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट ए बाई बी. ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा जहाँ पे ए को हम लोग कह रहे होते हैं, ए को हम लोग कहते हैं टारगेट इवेंट एंड बी को कहते हैं गिवन इवेंट. ओके, एंड इसकी जो फॉर्मूला होती है लेट मी राइट इट हियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, दिस इज एक्चुअली टारगेट इवेंट, दिस इज एक्चुअली गिवन इवेंट, is equal to probability of A intersection of B and divided by probability of B. This is also equal to and A intersection B by this is the formula and this is very important. क्योंकि देखो आगे जैसे जैसे जाओगे ना इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बन रही होती है. ओके, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. ठीक है, सो लेट मी टेक अ क्वेश्चन टू टेल यू कि आखिर मैं बोल क्या रहा हूँ.
ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन लूंगा एंड देन वी विल मूव टू एंड देन वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, so let me write it here. Question 1. So the question 1 is something like a dice is thrown. A dice is thrown. You have to find the probability of getting an even number. देखो ये सारे इजी प्रॉब्लम है ना, आपने पहले कर रखा होगा, बट मैं सारे आपको करवा के एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ. सो हैव पेशेंस फॉर दैट. ऑड नंबर. सी इज द प्रोबेबिलिटी of multiple of 3. D is the probability. I think leave it. Just discuss with the these three of all. Okay. So you have to find actually. To find आपने क्या क्या करनी है, आपने find करनी है probability of A, probability of B, probability of C, probability of A by B, probability of B by C, and probability of C A by C. Okay. So ये आपको कुछ चीजें find करनी है. So let's try to figure it out. चीजें हो क्या रही है. देखो, तो start solving. So obviously हमें पता है कि गेटिंग एन इवन नंबर, सो मेरा जो प्रोबेबिलिटी फॉर ए होगा वो होगा नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल. एंड जो फेवरेबल सैंपल है वो एक्चुअली क्या क्या है, 2, 4 and 6, and total possibility 6 है. So it will be like 3 by 6, so it will be probability 1 by 2. दूसरा है for getting an odd number, so 1 minus probability of A, which is actually even number 4. So we also get 1 by 2. Now the probability of C, which is actually is the multiple of 3, so we'll do NE by NS. And for the multiple of 3, what are the favorable outcomes? So it will be 3 and 6 by 6, so it will be 2 by 6, so we'll get 1 by 3. So these are the things that we will get. Now we have to find the conditional probability, that means probability of A by B. First try to understand के लिखी क्या हुई है कि A by B जो है ना वो लिखा क्या हुआ है. तो ये A by B कह रहा कि देखो B is an, ये B पहले रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, गेटिंग द ऑड नंबर है ना, एंड A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गेटिंग द इवन नंबर. So if you go through the formulas, let me write it here. P A intersection of B by P intersection of B. So A intersection B क्या है, जीरो है ना. जीरो क्यों है, क्योंकि ऑड एंड इवन में कोई कॉमन ही नहीं है. बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. अब ये क्वेश्चन है कि दोनों क्या है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. क्यों, क्योंकि दोनों एक ही इवेंट के अंदर एक दूसरे को अपोज कर रहा है. मतलब हैपनिंग ऑफ वन रूल्स आउट द हैपनिंग ऑफ अदर. इफ दी, अगर एक डाइस को फेंकते हैं तो या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन आएगा. अगर ऑड आता है सो इट्स रूल्स आउट द हैपनिंग ऑफ इवन, और अगर इवन आता है सो इट्स रूल्स आउट द हैपनिंग ऑफ ऑड. सो इट्स एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ठीक है. So its formula will be like A intersection B will be 0. So its probability is 0. Now let's find the next problem, which is probability of B by C. So what is the C event and what's the B event? So and let me write its formula as well. The probability of B intersection C by probability of C. So look at here. In B and C, if you look at here, its number of sample, favorable sample, so it will be 1, 3 and 5. So there is one thing is common, like 3 is common in both. Okay, 3 is also the multiple of 3 and 3 is also an odd number. So the B intersection C will be nothing but 1 by of 6. And the probability of C will be 1 by of 3. So when you solve this, you will get 3 by 6. Its answer will be 1 by 2. Next question is probability of A by C. So its formula will be probability of A intersection of C by probability of C. So the A intersection of C, is it anything common in A and C? Yeah, it is actually 6. So it's also will be 1 by 6, 1 by, let me write probability of C. Okay, 1 by 3. So its answer also will be 1 by 2. I hope these things were clear to you. Right. Now, let's take one more example and then we will look some types of conditional probability.
So the next problem is something look like, let me write it here. Okay, so the question is, if probability of A is equal to 3 by 8, probability of B is equal to 5 by 8, probability of A union of B is equal to 3 by 4. So you have to find the probability of A by B, the probability of B by A, probability of A bar by B, and A bar by B bar, and probability of B bar by A bar. So these things we have to actually find it out. So let's try to solve this question. So the first problem we have to find is probability of A by B. And its formula is nothing but probability of A intersection of B divided by probability of B, right? And we all know that this is not the independent event. So its formula is probability of A plus probability of B minus probability of A union of B and by probability of B. So probability of A is 3 by 8, 5 by 8 minus 3 by 4. So 1 minus 3 by 4 divided by probability of B is 5 by 8. So it will be 1 by 4, 5 by 8. It's counted as 2 by 5. Okay, so we will solve the first question. It's just a 2-minute thing, right? Now, the second problem that we have to find is probability of B by A. Okay. So the probability of B by A is nothing but probability of B intersection of A by probability of A. So the probability of B plus probability of A minus probability of A union of B divided by probability of A. Okay, so this is the formula that we already read in और आपने पढ़ी होगी 11th में भी and कल भी हमने discuss करा था. Okay. So the probability of B is given is 5 by 8, 3 by 8 and 3 by 4. Okay, so 1 minus 3 by 4 and the probability of A is 3 by 8. So it's something equal to, there is 1 by 4, 8 by 3. So it's equal to 2 by 3. So this is our probability. Now the third things that we have to find is probability of A bar by B bar. What it means actually. So it means is probability of A bar intersection B bar divided by probability of B bar. है ना? And we all know that the formula for the probability of A intersection of B bar is 1 minus probability of A intersection of B. And this is actually 1 minus probability of. So we will get as 1 minus probability of A union B is equal to 3 by 4. And 1 minus probability of B is equal to 5 by 8. So when we solve this, what we get? 1 by 4. And here we'll get 3 by 4. So we'll get 1 by 3 as final answer. Am I missed something? Okay, 2 by 3 because there is 8. Okay. And the fourth problem is probability of B bar by A bar. So it will be simple now. Probability of A bar intersection B bar divided by probability of A bar. So it will be actually equal to 1 minus probability of A union of B divided by probability of A bar. This is actually equal to 1 minus 3 by of 8 and 1 minus 3 by of 4. So it will be 1 by of 4 and 5 by 8. So it will be equal to 2 by 5. Okay, so this is actually as simple as you can understand. Now the thing is कि अगर यहाँ पे A and B तो independent event नहीं था, then we actually apply this formula. What if A and B are independent event? Look at here. ये noted point ऐसा करके मैं लिख देता हूँ.
what if A and B are independent, है ना? ये भी तो क्वेश्चन उठ मतलब आ रही है ना कि क्या होता अगर ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता. नाउ नाउ द थिंग्स इज कि we know that ki probability of A intersection of B in the independent for the independent events is actually equal to probability of A into probability of B, right? We actually we all know this. So when we are gonna write probability of A by B, so क्या होती है probability of A intersection of B divided by probability of B. So क्या होगी A intersection of B क्या होती है probability of A, probability of B by probability of B. So we'll get probability of A. Similarly, probability of B by A is equal to probability of A intersection of B by probability of A. So we'll get probability of A into probability of B by probability of A. And this get cancelled, so we'll get probability of. So this thing were happening if A and B were independent event. Okay. Now, now what I'm gonna tell you is the types of conditional probability. Okay, so it is actually an important things that you have to know in the conditional probability. The next heading is types of conditional probability. Okay, so actually the first type is both given and targeted event occur in same stage. Both given, जो आपने मैंने बताया था कि A by B में B is given event and A is targeted event. Target event and B is given event. So both given and target event occurs on same stage. Second, given event, it's called as B. B is on prior stage. ये है actually में conditional. And the third case, which is very important, कि given event, targeted event A is at prior stage. And this is actually known as Bayes theorem, which we will gonna discuss in today's or tomorrow's class. So these are the things that is actually based on types of conditional probability. Okay, so देखो तीन ही टाइप हैं. पहला ये है कि अगर टारगेटेड एंड गिवन इवेंट दोनों एक साथ ही हो रहा हो. दूसरा, अगर जो गिवन इवेंट है वो प्रायर स्टेज में हो रहा हो, मतलब पहले हो चुका हो. ठीक है, अभी मैं जितने भी यहाँ पे है ना सारे को मैं प्रॉब्लम से समझाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड बेस थ्योरम भी मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में करा ही देता हूँ मैं. एंड थर्ड केस इज कि टारगेट इवेंट जो है ना वो हो रही है प्रायर स्टेज पे. अब आपको ये पता होना चाहिए कि टारगेट और गिवन इवेंट्स क्या है. तो मैंने पहले ही बता रखा है ए बाई बी में अगर इसको देखो कंडीशनल को ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे A is our targeted event and B is our given event, है ना. ये मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ and you have to keep this thing in mind. Okay, so let me write it here one thing and then we will proceed. So here there is a theorem which is known as multiplication theorem. So let me write it here. There is actually known as multiplication theorem. And what is it? So it is actually the probability of A intersection of B is equal to probability of B into probability of A by B. अब देखो ये मैंने कुछ अलग से
कुछ नहीं लिख दिया, अगर आपको कंडीशनल की फॉर्मूला याद होगी, सो ए बाई बी की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैंने बस करा क्या कि दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर, समझ में आया? तो बस यही है, ठीक है। एंड दिस थ्योरम इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, दैट्स व्हाई इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो ये तो कंडीशनल के फॉर्मूले से ही आ गया ना। सो नाउ देखो, अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल कराने वाला हूँ विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कंडीशनल। तो आपको वही बॉल्स वाली प्रॉब्लम ही कराऊंगा मैं पहले, उसके बाद कार्ड्स वाली प्रॉब्लम कर जाएगी। तो मैं पहले अभी आपको बेसिक जो है ना बॉल्स वाली प्रॉब्लम कराता हूँ कि एक बॉक्स में टू डिफरेंट कलर और थ्री डिफरेंट कलर की बॉल्स रखी हुई हैं, सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी as according to the questions. Okay, so let me write the question here. So actually the first question is, uh, here is a box, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें 6 रेड एंड 9 वाइट बॉल है। ओके, एंड 2 balls are drawn, let me write it here, 2 balls are drawn one by one। एक एक करके ना दो गेंद को निकालते हैं, ठीक है, without respectively, obviously one by one। So a एक इवेंट है which is named as first ball drawn is red, first ball drawn is red। second event है first ball drawn is white, first ball drawn is white। third है second ball drawn is red, ठीक है, second ball drawn is red। मैं भी क्वेश्चन समझाऊंगा, डोंट वरी। सो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है, मल्टीपल थिंग्स, यू हैव टू फाइंड एक्चुअली बंच ऑफ थिंग्स हियर, like probability of A, probability of B, probability of A intersection of B, probability of A by B, probability of C by A. Then you have to find probability of C by B, probability of A intersection of C, probability of B intersection of C। मतलब जितने भी पॉसिबल है ना, मैं सारे ही करा दे रहा एक बार आपको। probability of C, probability of A by C, होपफुली रिपीट ना हुआ हो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी। चलो ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें जो है ना वो फाइंड करनी है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस बोल क्या रहा। ठीक है, तो क्वेश्चंस ये है ना कि दो गेंद एक एक करके एक बॉक्स से अपन निकाल रहे हैं, ठीक है, एंड जो फर्स्ट इवेंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो पहली गेंद जो अपन निकाल रहे हैं ना वो है रेड बॉल। ठीक है, तो पहले निकालते चलते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। द फर्स्ट आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जो एन ई बाई एन एस होगा, ऑब्वियसली जो फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या होगा कि पहली बॉल अपन को क्या चाहिए, रेड चाहिए। तो 6 बाई, और टोटल बॉल्स कितने हैं, 15, सो इट विल बी 6/15, है ना। ओके, नाउ सेकंड थिंग वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। जो पहली गेंद जो ड्रॉन हुई है ना वो व्हाइट है, तो व्हाइट्स की क्या होंगी, 9/15 होंगी, पहली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी। थर्ड थिंग्स हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। थर्ड थिंग्स हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऑब्वियसली कुछ कॉमन ही नहीं है, अगर रेड का आना तो व्हाइट को रूल्स आउट करा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 0, ऑब्वियसली डायरेक्टली देख लो। फोर्थ निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो होती है इट इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। So this value will be 0 from equation third, so its whole value will be 0।
नेक्स्ट हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए। ये सी बाई ए क्या है? तो यहाँ पे देखो, इट मीन्स कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। हमें तो क्या निकालनी है? हमें यही निकालनी है। देखो सी इवेंट्स क्या है, अब यहाँ पे देखो ए है और सी है। ए इवेंट क्या बोल रहा कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, एंड सी इवेंट बोल रहा कि सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। अच्छा, फर्स्ट बॉल भी ड्रॉन रेड ही हो रहा, सेकंड बॉल भी ड्रॉन क्या हो रहा? रेड ही हो रहा, है ना। ये एक बार अच्छे से समझो, पहली बॉल भी क्या हो रहा है? रेड ही निकल रहा है, दूसरी बॉल भी क्या निकल रहा? रेड ही निकल रहा है। So the final probability is nothing but actually both were actually the independent event। यहाँ पे देखो दो अलग अलग बारी करके अपन निकाल रहे हैं, एंड दोनों इवेंट्स क्या है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताया था कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे, है ना। सो एक्चुअली बारी बारी करके निकालें तो दोनों इवेंट विल बी इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि वो एक ही चीज रहा है बट दो अलग अलग बारी में कर रहे हैं ना, सो इट्स काउंटेड एज independent. So its actually value is equal to probability of second ball, or we can say the probability of C. So probability of C is, this is actually equal to probability of C. And what's the probability of C की जो second ball drawn हो वो red हो। तो first ball तो red आ चुका है, तो second ball drawn होने की 5/14 होगी ना, क्योंकि 5 ही तो red ball बचा है, 5/14। देखो यहाँ पे एक्चुअली 6 रेड बॉल थी। फर्स्ट बॉल एज अ रेड इवेंट में, मतलब ए इवेंट में निकल गया, एक बॉल निकल गई रेड की। बचे हुए बॉल जो रेड की कितनी गेंदें बची? 5 गेंदें बची ना। तो रेड की 5 गेंदों में से और टोटल बॉल्स कितनी बची? 14। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या रहा ना कि ये मेरे पास गिवन इवेंट है कि ए इवेंट हो चुका है एंड सी इज आवर टारगेटेड इवेंट। तो ए जो मेरा इवेंट्स है ना, जो मेरा ए इवेंट है, ध्यान से, जो मेरा ए इवेंट है वो गिवन इवेंट है, एंड गिवन इवेंट इज ऑलरेडी अकर इन प्रायर। सो ये कौन सा केस है? केस बी है। गिवन इवेंट इज एन प्रायर स्टेज, वो पहले ही हो चुका है, सो इट्स एन कंडीशनल, वो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी के इक्वल आ जाएगी, जो मैंने बताया था। सो इट्स इक्वल टू 5/14। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज इट? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई बी। देखो यहाँ पे, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बट थोड़ी डिफरेंट तरीके से। ये क्या कह रहा है कि बी जो मेरा है ना इवेंट, वो प्रायर इवेंट में हो चुका है। दिस इज ऑल्सो इन कंडीशनल। जो मेरा बी इवेंट है वो गिवन इवेंट है, वो पहले ही हो चुका है। दैट मीन्स कि पहले हो चुका है, यानी मतलब क्या है कि जो फर्स्ट बॉल ड्रॉन हुआ है ना वो व्हाइट हुआ है, इस बारी रेड नहीं हुआ है। इसके पहले वाले में क्या हुआ था कि फर्स्ट बॉल, ए इज आवर प्रायर इवेंट, ये पहले ही हो चुका है। गिवन इवेंट इज हैपनिंग, ऑलरेडी हैपेंड इन प्रायर इवेंट। सो जो ए जो मेरा है ना वो रेड बॉल निकल रहा था ना, एंड जो नेक्स्ट बॉल भी रेड निकल रहा है, बट इस बारी जो मेरा बी इवेंट है ना वो कह रहा है कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट बॉल। ठीक है, जो फर्स्ट बॉल ड्रॉन हुआ है ना वो एक्चुअली व्हाइट बॉल ड्रॉन। सो जो व्हाइट बॉल ड्रॉन हुई है पहली बारी में, सो व्हाट वी कैन से दैट कि जो रेड की जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो तो 6/14 हो गई ना, है ना, क्योंकि 6 रेड बॉल अभी भी है। सो इट इज एक्चुअली इक्वल टू 6/14। Now, next thing we have to find in 7 is probability of A intersection of C. So the probability of A intersection of C is actually equal to, we go through the multiplication theorem. So it will be equal to probability of A into probability of C by A. So the probability of A is actually, we are already calculated 6/15. And probability of C by A is we already calculated 5/14. So it will be actually equal to 30/15 into 14. So it will be equal to 2, equal to 1/7. Okay. Now, let's move to the next problem, which is called as, we have to find probability of B intersection of C. So the probability of B intersection of C, we use the यहाँ पे कौन सा वही multiplication theorem.
So it is equal to actually probability of B into probability of B by C. So the probability of B we already calculated. It is 9/15. देख रहे हो एक कैलकुलेट हो गया ना, सारी कैलकुलेट हो रहे बस. And the probability of B by C actually we calculated as okay, I did a simple mistake here. Here will be C by B. Okay, I used something. Okay, so here will be C by B. Because in multiplication theorem, if you look here, where it is, multiplication theorem, yeah, in multiplication theorem, if you look here, probability of A intersection of B is probability of B into probability of A by B. So the same thing I'm going to write here, probability of B into probability of C by B. है ना, यहाँ पे ही होता है ये देखो, where it is, yeah, in this problem. Okay, so 9/15 into probability of C by B is actually equal to 6/14. So it will be 2, 5, 18 by 70. When you all simplify it, it will be comes in a more simpler form. Okay, now let's move to the next problem, which is 9th. Probability of C. Okay, the probability of C is actually what it is. Probability of C is nothing but probability of A intersection of C plus B intersection of C. So we can write it here, probability of A intersection of C plus probability of B intersection of C is equal to, just add these both equations. So it will be, we can write it 10/70 plus 18/70 and it's 28/70. And we can, when we simplify it, it comes as 2/5. Now let's move to the next problem, which is based on Bayes, I think. Okay, probability of A by C. Look at here. यहाँ पे कह रहा है कि C is our actually the second ball drawn है ना. इस बारी मेरा जो C है वही पहले हो रहा एंड आवर टारगेट इवेंट इज एट प्रायर स्टेज है ना. टारगेट इवेंट इज एट प्रायर स्टेज हो रहा. दैट मीन्स यहाँ पे हमें बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा. ठीक है, जो टारगेट इवेंट है ना वो एक्चुअली एट माई प्रायर स्टेज हो रहा है. यहाँ पे जो मेरे पास टारगेटेड इवेंट है ना ए, दिस इज माई टारगेटेड, दिस इज माई गिवन. जो टारगेटेड इवेंट है वो कहाँ हो रहा, ये पहले ही हो रहा ना. ये एक्चुअली देखो, टारगेट इवेंट इज एट प्रायर स्टेज. A is like first ball is drawn is red, so we have to apply here the Bayes theorem. So actually, what is Bayes theorem? Let me write it here. So A intersection of C by probability of C. So we have to write the A intersection of C using multiplication theorem. Probability of A into probability of C by A, and probability of C we have to write as probability of A into probability of C by A plus probability of actually B into, मतलब पूरे का इवेंट लिख देना है, probability of C by B. So this is actually Bayes theorem. Bayes theorem. Okay. So you have to keep this thing in mind, and when you solve this, what you will get? Look at here, 1/7, and here is it 2/5, right? So it will be as 5/40. So these are the whole thing that based on conditional and multiplication theorem. So, okay, that's all for today's, guys. In tomorrow's class, we will discuss some more problem and very interesting problems, and then we will discuss some new topics. Okay, thank you.